भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नाभिरपत्यकामो प्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषमवहितात्मा यजत। तस्य हवावश्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु। द्रव्यदेशकालमन्त्रर्त्विग्दक्षिणाविधानयोगोपपत्या दुरधिगमोऽपि भगवान् भागवतवात्सल्यतया। सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निजजनाभिप्रेतार्थविधित्सया गृहीतहृदयो। हृदयङ्गमं मनोनयनानन्दनावयवाभिराममाविश्चकार। अथ तमाविष्कृतभुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषम् कपिशकौशेयाम्बरधरमुरसि विलसच्छ्रीवत्सललामम्। दरवरवनरुहवनमालाच्छौर्यमृतमणिगदादिभिरुपलक्षितम्। स्फुटकिरणप्रवरमुकुटकुण्डलकटककटिसूत्रहारकेयूर नूपुराद्यङ्गभूषणविभूषितमृत्विक्सदस्य गृहपतयो धना इवोत्तमधनमुपलभ्य स बहुमानमर्हणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः। ऋत्विज ऊचुः अर्हसि मुहुरर्हत्तमार्हणमस्माकमनुपथानाम्। नमो नम इत्येतावत्सदुपशिक्षितं कोऽर्हति पुमान्। प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोरर्वाक्तनाभिर्नामरूपाकृतिभिः रूपनिरूपणम्। सकलजननिकाय वृजिननिरसन शिवतमप्रवरगुणगणैकदेशकथनादृते परिजनानुरागविरचितशबलसंशब्दसलिलसितकिसलय तुलसिकादूर्वाङ्कुरैरपि संभृतया सपर्यया किल परमपरितुष्यसि। अथानयापि न भवत इज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। आत्मनि एवानुसवनमञ्जसा व्यतिरेकेण वो भूयमानाशेषपुरुषार्थस्वरूपस्य किन्तु नाथाशिष आशासानानामेतदभिसंराधनमात्रं भवितुमर्हति। तद्यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परमविदुषाम् परमपुरुषप्रकर्षकरुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यमुपकल्पयिष्यन् स्वयं नापचित एवेतरवदिहोपलक्षितः। अथायमेव वरो ह्यर्हत्तमयर्हि बर्हिषि राजर्षेर्वरदर्षभो। भवान् निजपुरुषे क्षणविषय आसीत्। असङ्गनिशितज्ञानानलविधूताशेषमलानां भवत्स्वभावानामात्मा रामाणां मुनीनामनवरतपरिगुणितगुणगण परममङ्गलायन गुणगणकथनोऽसि। अथ कथञ्चित् स्खलनक्षुत्पतनजृम्भणदुरवस्थानादिषु विवशानान्न स्मरणाय ज्वरमरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु। किञ्चायं राजर्षिरपत्यकामः प्रजां भवादृशीमाशासान ईश्वरमाशिषाम्। स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिवाधनफलीकरणम्। को वा इह ते पराजितोपराजितया माययानवसितपदव्यानावृतमतिर्विषयविषरयानावृतप्रकृतिरनुपासितमहच्चरणः।
यदुहवावतव पुनरदभ्रकर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थधियाम् मन्दानां नस्तद्यद्देवहेलनं देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिवोढुमविदुषाम्। श्रीशुक उवाच इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवाननिमिषर्षभो वर्षधाराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह। श्रीभगवानुवाच अहो बताहमृषयो भवद्भिरवितथ गीर्भिर्वरमसुलभमभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरोपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं यद्विजदेवकुलम्। तत आग्नीध्रीयें सकलयावतरिष्याम्यात्मतुल्यमनुपलभमानः। श्रीशुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्तर्दधे भगवान्। बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया तदवरोधाय मेरुदेव्यान् धर्मान् दर्शयितु कामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणामूर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवावततार। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।